Hello guys, welcome back to my channel English with Samreen and welcome to today's video. In today's video we'll be learning about the English vocabulary building and ideas of improvement, and there'll be interesting exercise also which you can answer in the comment section. In today's class we'll be learning the English vocabulary from very basic, बहुत basic से मैंने English vocabulary को समझाने का attempt किया है. आप आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आप इन्जॉय करोगे. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी लेके आई हूँ एक्सप्लेनेशन के बाद में, ताकि आपकी स्ट्रक्चर्स और क्लियर हो और बेसिक से क्लियर हो, ताकि यू speak those words when you know when they are exactly to be used, where it is to be used and how it is to be used. So ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज के वीडियो लेसन के साथ हम शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट. तो सबसे पहले फ्रेंड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वोकेबलरी. ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो आपके बेडरूम में होती है, ऐसी चीज़ों के नाम जो आपके बेडरूम में होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनको क्या क्या कहते हैं. ओके सबसे पहले बेड, ऑब्वियसली बेड होता है. उसके बाद बेड के बाद बेड के पास बेड साइड लैम्प होता है, सो दैट ड्यूरिंग द नाइट यू आर जस्ट एबल टू लाइट दिस लैम्प एंड हैव अ लाइट, लाइट. सो उसके बाद उसके नीचे एक बेड साइड टेबल होती है. देन यू हैव अ मिरर फॉर स्टाइलिंग योर सेल्फ. देन यू हैव हेयर ब्रश, कूम. देन यू हैव अ ड्रेसिंग टेबल जिसके ऊपर अक्सर मिरर होता है. एंड देन यू ड्रेस योर सेल्फ. Then there is chest of drawers for keeping those stuff. Then there is an alarm clock that enables you to wake up early. Then there is a bedside table जो लैम्प के ऊपर होती है, लैम्प के नीचे प्लेस होती है अक्सर. Then you have a wardrobe to keep all your clothes. Then you have your pajamas, your t-shirts and every sort of that stuff. और इसके अलावा भी अगर आपके बेडरूम में कुछ और है, प्लीज़ कमेंट एंड enrich your. Now we will be talking about the vocabulary which you find in the bathroom. Meaning to say is that the things that you find, the names of the things that you find in your washroom, bathroom. So you have a shower to take the shower. It is not a shower, it's shower. Then you have a shampoo. Then there is a soap. Then you have a toothpaste. Then we have a shower gel. There is a razor to shave the beard of the males. Then there is a toothbrush. Then there is a toilet seat. Then there is a shelf to keep all those shampoos and soaps and shower gels and other stuff. Then there is a basin and there is a towel to clean your hands. After learning about the vocabulary that is related to the bedroom and the bathroom, it's time for exercises, because the recalling is better with the exercises. You recall it better while you are solving the exercises. And the first exercise, you have to look at these pictures, and the pointers are given everywhere where the thing is placed. You have to write the names of those things that are kept in exercise 1, and you have to comment down below, and whosoever comment down first 5, they will be announced as winners. In the second exercise, you have to write 5 more things, 5 things that you need when you stay with your friends. ऐसी 5 चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक दिन के लिए अपने फ्रेंड के घर जाएंगे. इसलिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आप दोनों एक्सरसाइजेस की जो आंसर हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं ज़रूर. In the second exercise, you have to look at these pictures and you have to write what these people are doing. You have to write what Anne, Mrs. Park, Jamie, Selim and Umid, Mr. Park and Lee is doing. You have to write, and you have to also comment these answers in the comment section below. And you can also add the things that are kept here and merge the sentences, and you can add nouns that is shown in the picture. Okay. So you can, for example, Anne is cleaning her teeth. You can write also Anne is cleaning her teeth with a toothbrush. So yes guys.